श नारद ऋषि बृहतीक्षन्द श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। ओम नारदर्षै नमः शिरसि, ओम बृहते छन्दसि नमः मुखे, ओम श्रीकृष्ण परमात्मा देवतायै नमः हृदि, ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये हस्त प्रक्षालनम्। ओम भक्ति शक्तये नमः पादयोः, ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभौ। ओम श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्ध्यार्थ पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम क्लां हृदयाय नमः, ओम क्लीं शिरसि स्वाहा, ओम क्लूं शिखायै वदत्, ओम क्लीं कवचाय हुम्, ओम क्लीं नेत्रात्रयाय वौषध, ओम क्लासाय फड, ओम क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, ओम क्लूं मध्यमाभ्यां नमः, ओम क्लीं अनामिकाभ्यां नमः, ओम क्लूं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम क्ला करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। ध्यानम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिम् गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि स्वस्तरुणे कराग्रविगलात् कल्पप्रसूनामृताम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरिर्निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबध्यनि विलसत् गोपी सहस्रावृताम् अस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृते सत्सङ्गात् भवनिस्प्रियो गुरुमुखात् शेषं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म सकलं प्रक्षेण कर्मान्तर न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदया निर्लो न मायानयो अर्धानुग्रहलब्धमाद्यदमनि द्वारबहिर्निर्गत मुक्तोर्चेदिन पूर्वपक्षसुहृदं मासाब्दवातां समाद गोवेदुत्परुडेन्द्रदातिमहिता श्रीमन्तसेन्द्रावृता श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मण सायोज्यं समवाप्यनन्दति समं तेनैव धन्या पुमान् सभ्यं पादं प्रसार्याश्रितदुरितारं दक्षिणं कुञ्चयित्वा दानुन्यादाय सभ्येतरमितरभुजं नागभोगे निधाय पश्चदबाहुद्वयेन प्रतिभटसमने धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूषादिजुष्टो जनयतु जगता सर्ववैकुण्ठनाथ कूर्मादीन् दिव्यलोकं तदनुमणिमयं मण्डपं तत्र शेषं तस्मिन् धर्मादिपीठं तदुपरि कमलं चामरग्राहिणी सा विष्णुदेवीं विभूषायुधगणमृगं पादुके वैनतेयां सेनेशं द्वारपालां कुमुदमुखगणान् विष्णुभक्तान् प्रपद्ये श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि सुकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथमदीयोऽयं सफला
सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वम् अगतीनां गतिप्रदा संसारमङ्गलानां प्रसीद पुरुषोत्तम नारायण दया सिन्धु वात्सल्य गुणसागर एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनाम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति बोलिए गोविंद गोपाल भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को अथ द्वादशोऽध्यायः सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनान् नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनान् एतद्व कथितं विप्रा विष्णुश्चरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तिता साक्षात् सर्वपापहरो हरिनारायण ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पतिः अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगसमाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं परीक्षितम् उपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेश्वराजर्षि विप्रशापात् परीक्षितः शुकस्य ब्रह्मर्षवस्य संवादश्च परीक्षितः योगधारणयुत्कान्ति संवादो नारदाजयोः अवतारानुगीतं च सर्गप्राधानिको ग्रतः विदुरोद्धव संवाद क्षत्रे मैत्रेययोस्ततः पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थितिः ततः प्राकृतिका सर्ग सप्त वैकृतिका शये ततो ब्रह्मांड संभूतिर्वैराजः पुरुषो यतः कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति सद्म समुद्भवः भुव उद्धरणीं भूधिर्हिरण्याक्षवधू यथा ऊर्ध्वतिर्यक् अवाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्याथ यतः स्वयंभुवो मनुः शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्या प्राकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्म समुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथु प्राचीनवर्हिषा नारदस्य च संवादस्ततः प्रियव्रतं द्विजा नाभेस्ततो नो चरितं ऋषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्ष समुद्राणं गिरिनद्यूपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्ष जन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्तति यतो देवासुरनरास्तिर्यं नगखगादयः त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्चादितिर्द्विज दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरवतारस्य विष्णुर्हयशिरादयः कौर्मं धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पते क्षीरोदमथनं तद्वत् अमृतार्थे दिवौकसां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंश सुद्युम्नस्य महात्मनः
इलोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोपाख्यान एव च सूर्यवंशानुकथनं ससादाद्यः नृगादयः सौकन्यं चाथ सर्याते ककुत्थस्य च धीमत खट्वाङ्गस्य च मान्धातु सौभरे नगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकरणं भुव ऐलस्य सोमवंशस्य ययातिर्नौसस्य च दौश्यन्ते भरतस्यापि सन्तनुत तत्सुतस्य च ययातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशोऽनुकीर्तितः अत्र यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विष पूतना सुपयपानं सकटोच्चाटनं शिशुः तृणावर्तस्य निशेषस्तथैव बकवत्सयो धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिसर्पतः दमनं कालियस्याहिर्माहिर्नन्दमोक्षकं नन्दमोक्षणं व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोचितो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य शूर भेरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रिभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धिर्वधूरिष्टस्य केशिना अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः व्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च यो वध मृतस्यानयनं सूनु पुनः सान्दीपने गुरु मथुरायां निवसताय यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुदबहरामाभ्यं युतेन हरिणा द्विजा जरासन्धसमानीतः सैन्यस्य बहुषु वध घातनं यवदेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्माय सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य देशतो हरिहरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्दनं प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् चैद्यपौण्डकशालानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मति साम्बरो द्विविधपीठो मुरपञ्चजनादयः माहात्म्यं च वदस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम् भारावतरणं भूमिर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापसपदेशेन संहार स्वखिलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुत यात्रात्मविद्यायाखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णय ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावत युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणामुपप्लवः चतुर्विध प्रलय उत्पत्ति स्त्रीविधा तथा चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्ति स्त्रीविधस्तथा देहत्यागश्च राजर्षि विष्णुरातस्य धीमतः शाखा प्रणयनं ऋषि मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुषविन्यास सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजा श्रेष्ठ यत्पृष्टोऽहमिहास्मिव लीलावतार कर्माणि कीर्तितान्यः सर्वशः पतितस्खलितश्चात् क्षुत्वा वा विवसु ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्य मानो भगवानन्त श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा तमोरुको भ्रमिवातिवात मृषा गिरस्ताय सतीरसत्कथा न कथ्यते यद भगवान् अधूक्षज तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं
तदिव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदिव सस्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव सोकर्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते न तद्वचसित्रपदं हरिर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृहीतकरिः तद्वंशतीर्थं न तुहं ससेवितं यत्राच्युतोस्तत्र हि साधवो मला न वाग्मिसर्गो जनतागसंप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरेण ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमं यशस्त्रियामेव परिश्रमपरुवर्णाश्रमाचारतपश्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरे अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो क्षिणोत्य भद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजाग्र्यबत भूरिभागा यच्च स्वदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीशम् अजस्रभावा भजता विभेष्य अहं च संस्मरितात्मतत्त्वं श्रुतं पौरा मे परमर्षिभक्तं प्रायोपवेशे नृपते परीक्षितः सदस्त्रिशीलां महतां च शृण्वताम् एतद्वा कथितं विप्रा कथनीयोरुकर्मणा माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वासुविनाशनं य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यदि श्रद्धवान् यो नु शृणुयात् पुनात्यात्मानमेव स द्वादश्यामेकादश्यं वा शृण्वन्नायुष्यवान् भवेत् पठत्यनस्नन् प्रयतस्ततो भवत्यपातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य संहितामेतं पठित्वा मुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धा पितरो मनवो नृपा यच्छन्ति कामान् शृण्वतु यस्य कीर्तनात् ऋचो यजुंसि सामानि द्विजोदित्यानुविन्दति मधुकुल्या घृतकुल्या पयकुल्या सतत्फलम् पुराणसंहितामेताम् अधीत्य प्रयतो द्विजा प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोधीत्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्यो दधिमेखलां वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रशुद्धितपातकात् कलिमलसंहति कालनोऽखिलेषु हरिरितरत्र न गीयते भीक्षणम् इह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथा प्रसङ्गै तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिं द्युपतिभिरजशकक्रासङ्कराद्यैर्दुरवसितस्तमच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः स्वात्मा न्युपरचितस्थिरजङ्गमालयाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिभृतचेता
तद्व्युदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला तीर्थसारास्तदीयम् व्यतनुत कृपयायास्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलवृजिनगनं व्याससूनुं नतोऽस्मि स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला क्लिष्टसारस्तदीयं व्यतनुत कृपयायास्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलवृजिनगनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः। Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva Ananta Vaikunta Mukunda Krishna Govinda Damodara Madhaviti Gopala Damodara Madhaviti बोले भक्तवत्सल भगवान को। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरि ग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोकमठाकृतिर्भगवता श्वासानिलापान्तु वः यत संस्कारकलानुवर्तनवसाद् वीलानिभीनाम्भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यति। पुराणसङ्ख्यासम्भूतिम् अस्य वाच्य प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादिश्च निबोधत। ब्राह्मं दशसहस्राणि पाद्म्यं पञ्चोपषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशतिचतुर्विंशतिशैवकं दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशति मार्कण्डं नववाण्णं च दशपञ्चचतुश्शतं चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा पञ्चशतानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैव तु चतुर्विंशतिवाराहमेकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितं कौर्मं सप्तदशाख्यातं माच्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशत्सौपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराणसन्दोहश्चतुर्लक्ष उदाहृत तत्राष्टादशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यति इदं भागवता पूर्वं ब्रह्मणि नाभिपङ्कजि स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम् हरिलीला कथा व्रातामृतानन्दित तत्सुरम् सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम् परत्वद्वितीयं तस्मिन्निष्टं कैवल्यैकप्रयोजनम्।
प्रौष्ठपद्म्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं राजन्ति तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यति तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्यादरति क्वचित् निम्नगानां यथा गङ्गा देवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भु पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमं तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् पठन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुचे नरः कस्मै येन विमर्शितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना भगवत्राताय कारुण्यता तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुचु ममुचत् भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। अब हामी एउटा श्लोक फेरि एउटा दुईटा साथमा सबैले भन्छौँ है अन्तिमको। भवी भवी यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाथस्त्वं नो यथा प्रभु भवी भवी यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाथस्त्वं नो यथा प्रभु भवी भवी यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाथस्त्वं नो यथा प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरे परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि
हरे परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याष्ट अष्टादशसाहस्रं पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्याय हरये नमः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन तदङ्घ्रिकमले रतिर्मे यच्च शाश्वती कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान को, श्री कृष्ण चंद्र भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथम स्कंद अथ प्रथमोऽध्याय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञासरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यां वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो वृद्ध्यवरोध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तज्जनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमृगाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय। अब हामीले अहिले जुन दुईटा श्लोकहरू पाठ गर्यौं अन्तिममा, र यो अन्तिम यी दुईटा श्लोकको सार हामी भनेर यहाँबाट उड्छौं। अब सारा शास्त्रको सार भागवत, भागवतका सार मन्त्रहरू गर्दै गर्दै अन्तिममा यो सारा पाठको द्वादश स्कन्द, सारा स्कन्द अध्याय र श्लोकहरूको सार यी अन्तिममा दिएको छ। त्यही कारण हामीले दुईटा श्लोकहरू पाठ गर्यौं। अब श्रीमद् भागवत लगाउनुको अर्थ के हो त भन्दा, हामीलाई के भनेर हामीले जमलाहात गर्यौं त भन्दा, हामी जहाँ जहाँ जन्मिए तापनि अब यहाँबाट गइसकेपछि जसले शरीर त्यागेर जानु पर्दछ, जहाँ जहाँ म गए तापनि भगवानमा भक्ति लागिरहोस्। भवे भवे यथा भक्ति, जहाँ जहाँ मेरो जन्म भए तापनि भगवानको संगत मिलिरहोस्, भगवानमा भक्ति लागिरहोस्, भगवानका चरण कमलमा मेरो मन लागिरहोस्।
यथा कुरुस्व, हे भगवान त्यो लगाउन पनि मैले लागोस् भन्दा मेरो मन लाग्नेवाला छैन। त्यो भगवानले लगाइदिनु पर्यो, बुद्धि दिनु पर्यो। मेरो मन म आफै लगाउन सक्दिनँ, किन मेरो मन चञ्चले छ, यता कुद्छ उता कुद्छ। त्यस कारणले त्यो मनलाई चाहिँ भगवानलाई जिम्मा दिनु पर्यो। यो मेरो मन सही होस्, कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो मन ठ्याक्कै लाग्यो भने मात्रै गडबडी हुँदैन। जस्तै यहाँ हामीले पाठ गर्दा पनि मन अलिकति आँखो यता मन चिप्ल्यो भने यता अक्षर चिप्लिन्छ। त्यो नचिप्ल्याउनका लागि पहिला मन लागोस्, जहाँ जहाँ भए पनि त्यसरी मन लागोस्। हे प्रभु भनेर हामीले, प्रभु भनेका समर्थवान, यो ब्रह्माण्डका नायक, हामी सबैलाई राख्ने बसाउने ठाउँ दिने ब्रह्माण्डका नायक हे प्रभु, हजुरै समर्थवान हुनुहुन्छ। अरू कसैले पनि त्यो सक्नेवाला छैन। मैले सक्दिनँ, म भन्ने वस्तु नि हजुर हुनुहुन्छ। भित्र अन्तर्यामीमा रहेर, चेतनाका रूपमा रहेर हामी बोल्दैछौँ। यदि यो चेतना हजुर यहाँबाट खुस्किनु जाइदिनु भयो भने यो मूर्ति बोल्दैन। त्यस कारणले हे प्रभु हजुरले लगाइदिनु पर्यो। अनि हजुरको सङ्कीर्तन गर्नमा मन लागिरहोस्। हजुरका सङ्कीर्तनद्वारा नै मेरा पापहरू पखालिन्छन्। मनसा वचसा कर्मणा शरीर आदिले गरेका पापहरू। हामीले भनेका छौँ काटमार गरेका छैन, कसैलाई कुटेको पिटेको लुटेको चुटेको छैन, तर पनि कसरी पाप लाग्छ भन्दा हाम्रोका मनमा सोचिन्छ नराम्रो। जब मनमा सोच्यो आँखो बिग्रियो, आँखो रातो पिरो भयो। यी मनबाट उत्पत्ति हुने त्यस्ता नकारात्मक सोच रूपी पापहरू पनि हजुरकै नाम सङ्कीर्तन गुणद्वारा जाउन् भनेरै हामी भगवानका नाम सङ्कीर्तन गाउँदछौँ। नाम सङ्कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जसको नाम सङ्कीर्तन गुणगान गाउनाले नि पाप भनेका के हुन्छ, टाँसेर आएको हुन्छ भनेको। पाप भनेको पहिले के हो भने इच्छा, काम भनेको इच्छा। जब आफूले भने जस्तो काम भएन भने क्रोध आइहाल्छ, जङ्गी चलिहाल्छ, दिइहाल्नु जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ इच्छा। कुनैमा त्यो इच्छा, कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोधबाट लोभ लाग्छ, लोभबाट मोह हुन्छ, काम क्रोध लोभ मोहबाट मद हुन्छ, उसलाई घमण्ड हुन्छ, अनि मात्सर्य हुन्छ। मात्सर्य भनेको अब यसलाई नढुट्याइ म सक्थेँ, यसलाई नगिराइकन चाहिँ म छोड्दिनँ, बरु म आधी लडे पनि लडौँ तर यसलाई सिँगै लडाउँछु भन्नु चाहिँ मात्सर्य। यी सबै कुराहरू चाहिँ हे भगवान हजुरकै नाम कीर्तनद्वारा पखालिने भएका कारणले मेरो यो सबै पखालिदिनु पर्यो। प्रणाम, म भित्रैबाट प्रणाम गर्दछु। सारा दुःखलाई विनाश गरिदिने हरिम परम हरिम नमामि। यी सबैभन्दा परका हरि, सबैभन्दा पर भनेको को माथि बसेका हरि। हरम पापम दुःखम हरति इति हरि, जसले हाम्रा पाप दुःख कष्टहरूलाई हरण गरिदिनुहुन्छ। यस्ता हरिलाई चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, नमन गर्दैछौँ भनेर आज सारा हामीले 3 दिनदेखि भगवानका नाम लिँदै 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 यी सारा पाप पखालेर जुन जसका लागि गरेका थियौँ हामी सबै भएर उहाँको मुक्ति होस् भन्ने सबैको प्रार्थना भगवानमा लागिदियोस्। भगवानद्वारा भगवानले हाम्रा प्रार्थनालाई सुनिदिएर हाम्रा इच्छाहरू पुरा गरिदिनु पर्छ। हाम्रो इच्छा भनेको पितृ सही ठाउँमा गएर पितृद्वारा आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त होस् भन्दै हामी सबै प्रार्थना गर्दै आज हामी यही पाठ राख्दछौँ। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान को जय, लक्ष्मीनारायण भगवान को जय। आजसम्म हामीले केही त्यस्तो अप्ठ्यारो नराम्रो हजुरलाई पर्यो हामी भने त्यो सबै क्षमा हामी यहीँ चाहन्छौँ भनेर उठ्छौँ। गुरुजी केही भन्नु छ, केही छ भने भन्नु। यसो श्रीमन्नारायण थोरै भन्नु त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण
पितृ नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान को भाष्यकार भगवान को योगराज स्वामी जी महाराज को काश्यप गोत्र का पितृहरू को उद्धार हो वैकुंठ उत्सव को आज का आनंद को जय जय श्रीमन नारायण लो छोरा अब एउटा